So let's start your snap interview for geotechnical engineering, as you have interview in Rites. Yes. So first of all, introduce yourself. So good afternoon, sir. I am Saurabh Elawat and I hail from Muzaffarnagar. Coming to my educational background, I have done my class 10th and 12th from Muzaffarnagar itself, and then I did my BTech in civil engineering from IIT Allahabad. And apart from educational experience, I have a professional experience also. I worked in as a data scientist, as a data analyst in a multinational IT corporation, and my hobbies are reading and running. Okay. So can you tell me any two engineering properties of the soil? So they are permeability and their dry density. Permeability and dry density, right? So how will you find the dry density? So first we will find bulk density from sand replacement method or core cutter method, and then we will determine water content from a calcium carbide test, and then we can find the gamma D by gamma T upon 1 plus W. Okay. If you are just doing the calcium carbide test, so are we applying any correction on the moisture that we are getting from this calcium carbide test? Yes, sir. The moisture content that we get from calcium carbide is in terms of the total weight of the soil, but we need in terms of the solid that is present. So we apply the correction. What is the correction? Sir, sir, I can derive the formula. Uh, so I think it's W upon 1 minus W. I guess it's that. W upon 1 minus W equal to what? Yes. So it equals to the new water content that the water content with respect to soil. Oh, okay. What is the pressure bulb, Saurav? Sir, pressure bulb we use in terms of when we determine the vertical pressure in soil. So pressure bulbs are like they are the isobars. Uh, uh, we draw the pressure lines, and wherever the same pressure is there, we join them, and that is a pressure bulb. And we can know like the solid that falls inside this pressure bulb is stretched, and the outside it's not stretched. So there is a load on the ground surface. Okay, that will be point Yes, sir. load. So which one approach you will use for calculation of this vertical pressure at depth Z from the ground surface? Bossinus approach or Westergaard approach, and why? Sir, I would go for the Bosnian approach up to a certain depth, and after that I will go with Westergaard because for a certain depth, the Bosnian approach gives higher stresses, and after that the Westergaard gives higher stresses. So we can use accordingly. Okay, meaning to say that first you will use the Bossinus, after that you will go with the Westergaard. Yes, sir. Okay. So what is the application of this influence chart that we have? Sir, the influence chart uh, is a form of it have a concentric circles and radial lines, and by placing it on the uh, by placing it, we can know like how much stress is going to be there. Sir, I can't recall fully. Okay, no issue. How will you differentiate between consolidation and compaction? Hello, Yes, Saurav. hello. Yes, Saurav, are you there? Saurav, are you there? Sir, your voice is not coming. Saurav, are you there? Yes, sir. Saurav? Hello. Yes. Can you tell me the difference between consolidation and compaction? Am I audible now? You're audible to me, Saurav. Okay. I think there's some network issue from your end.
So now is it okay? Yeah, this is fine. Okay, okay. What is the So difference sir, between consolidation and compaction? sir, compaction is a instantaneous process, while consolidation is a time-taking process. And in compaction, in compaction, the volume of solids is reduced, and the volume by the expulsion of pore airs, and it happens by the application of uh, effective stresses. It happens by the application of loads, whether static or dynamic. And in the consolidation, there we have at a constant effective stress, the solids will settle. The pore water will go on, the pore water will be expelled, and there we will observe a settlement in the soils. Sorry, you said in And compaction in there. the consolidation, the pore water will go out in a laminar way. Sorry, you said in Sorry, compaction so internet is, yes, sir. there is a reduction in the volume of solid. Is it true? There is a reduction in volume of solid. So please pardon. In compaction, you said there will be reduction in volume of solid. Is it true? There will be reduction in volume of solid. What do you think? Sir, in compaction, Hmm? uh, sir, in compaction, at the, yes, sir, there is air is going out, so there will be reduction in the volume. Volume of solid, I am asking. No, no, not in the volume of solids. In the volume of soil, there will be reduction. You said in consolidation you are applying a constant effective stress, right? And due to that, what is happening? The pore water pressure is expelling out. Yes, sir. Now, just think, Saurav, if water is expelling out, then pore water pressure with this time will decrease. If Yes, pore sir. water pressure Sir, is decreasing, then effective stress will increase. Then how it will be constant? sir, actually, sorry, it was total stresses. At the same total stresses, we observe this consolidation. So this total stress is due to what? So this total stress is due to the whether it is the applied load, or it may be due to like water table have gone down and thus the weight above the soil has increased. So it may come due to these factors. Okay. Which one method we are following in railway for the stress calculation? That is vertical stress. Which one method we are following? Bosini's method, Estergaard method. So not only Okay, fine. How will you define the shear strength of soil? one. Sir, shear strength of soil is defined as the ability of soils to resist sliding, and it is due to cohesion and the internal friction that exists in the soil. And how will you define the bearing capacity of the soil? Sir, bearing capacity is defined as uh, the allowable load that the soil can take uh, before failure, or the load that causes settlement within the permissible range. So what is the meaning of this allowable load? Uh, Sir, the bearing capacity. Sir, our allowable load is that, sir, which doesn't cause soil to fail in shear. What is the purpose of plate load test?
Sir, a plate law test is used to find the modulus of subgrade reaction, or and it is also used to find the bearing capacity of soil at the level of foundation, or and the settlement the that will happen in soil due to different loads. The code for the plate load test. Sorry, sir. Okay, if we have to find the shear strength of soil, generally, so we are calculating the C and phi. Have you heard about them? C and phi. Yes, sir. What do you think? They are representing the engineering Yes, sir. properties of the soil or index properties of the soil? Sir, these are not the properties of the soil. Value of these C and phi varies with respect to the test that we perform. Okay. My last question to you, Saurabh, what is bulking of sand? Sir, bulking of sand is a phenomenon that on adding water in dry sand, its volume uh, we see its volume increases because its volume decreases as water is added in it. There is capillary actions, and due to which the soil come together in this points meniscus are formed, and thus we see a reduction in the volume of soil. Bulking of sand is due to the moisture content, or what you said? If we are increasing the moisture, then bulking reduces. Sir, if we increase the moisture content, the capillary reactions are formed, and it will lead to the sorry, increase sorry, yeah, dense. So the density decreases, but the volume increases. Why this bulking will not take place in case of this coarse grain soil like gravel? Sir, the menisces are not formed in them. In the fine sands, the capillary is the surface tension forces are able to act, but not in the porcelain sands. आपका इंटरव्यू कब है सौरभ? Sir, 1st September. 1 सितंबर अभी है. थोड़ा सा रीफ्रेम करो खुद को, थोड़ा सा और रीफ्रेम करने की जरूरत है सौरभ. देखो, मैंने आपसे जो चीजें पूछी कि कोई दो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, वन यू सेड दिस परमेबिलिटी, सेकंड यू सेड द दिस ड्राई डेंसिटी, राइट? हाउ टू कैलकुलेट द दिस ड्राई डेंसिटी, दैट इज फाइन कि हम साइट के ऊपर जो टेस्ट कर रहे हैं जो आपने बताए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर टेस्ट, इसका आप कोड भी थोड़ा ध्यान रख लो कि कौन से कोड है, राइट? और वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो हम निकाल रहे हैं मेथड से, यू सेड दिस कैल्शियम कार्बाइड. एक मेथड का और नाम याद रख लो ऑन साइट, कौन सा यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं, जैसे सैंड बाथ मेथड है, ये भी हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट ऑन साइट निकालने के लिए. और किस मेथड में करेक्शन लगती है, वो करेक्शन का फॉर्मूला. तो मान लो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल मास बोलता हूँ कि जो वाटर कंटेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो डब्ल्यू प्राइम है, और विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड जो वाटर कंटेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो डब्ल्यू है, तो मुझे जो वाटर कंटेंट मिलता है रैपिड मॉइस्चर मीटर या कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट से, वो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल मास मिल रहा होता है, इसको मैं डब्ल्यू प्राइम बोलता हूँ. तो उसको अगर मुझे डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है, रिस्पेक्ट टू सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला वही है जो आपने बताया था, डब्ल्यू प्राइम अपन वन माइनस डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा, राइट? प्रेशर बल्ब थोड़ा पढ़ो इनके बारे में. देखो, प्रेशर बल्ब क्या होते हैं ना, तो हम सेम वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द ग्राउंड सरफेस के ऊपर कोई लोड लग रहा है और उसके कारण सॉइल मास में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे. तो जैसे जैसे आप ग्राउंड सरफेस से नीचे जाते जाओगे बच्चे, वैसे वैसे स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा. अब इसमें दो चीजें आती हैं कि जहाँ पे पॉइंट लोड लगा, ठीक, आप उसके नीचे वर्टिकल स्ट्रेस बताना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, या पहले वहां से एक रेडियल डिस्टेंस मूव किए और उसके बाद आप किसी डेप्थ पे फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर आप लिखना चाहते हो, ठीक है? तो ये जो मेरा प्रेशर बल्ब है, ये सेम वर्टिकल स्ट्रेस वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो मुझे यहाँ पे कंटूर मिलता है, दैट इज काइंड ऑफ द प्रेशर बल्ब, जिसको हम आइसो बार भी बोलते हैं. आइसो मीन सेम, बार मतलब प्रेशर का यूनिट होता है. तो एक Sir, स्पेशल कर्व voice is बनता है not. ये Sir, voice is बल्ब शेप में बनता है breaking. ये. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड, सौरभ. Hello. सौरभ, मुझे लग रहा है ना आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू है बच्चे. Uh, yes, sir. Now it's clear, sir. अच्छा देखो, एक बॉसिनिस थ्योरी, एक वेस्टरगार्ड थ्योरी है. ऑल दो वेस्टरगार्ड थ्योरी में जो एजम्पशंस है ना, इनके एजम्पशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेस्टरगार्ड साहब ने ये माना कि सॉइल मेरी होमोजीनियस है, नॉन आइसोट्रोपिक है, मतलब एक लेयर्ड सिस्टम है, और सेमी इनफाइनाइट इन लेंथ है.
और अगर मैं बॉसिनिस थ्योरी की बात करूं तो उन साहब ने ये बोला कि सॉइल होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, सेमी इनफाइनाइट इन लेंथ है। तो बॉसिनिस ने आइसोट्रोपिक माना, लेकिन रियलिटी में सॉइल आइसोट्रोपिक नहीं होती कि उसका एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो। तो वेस्टरगार्ड थ्योरी ना प्रैक्टिकल सिनेरियो को बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन स्टिल हम बॉसिनिस थ्योरी को ही यूज कर रहे हैं, हम वेस्टरगार्ड थ्योरी को यूज नहीं कर रहे। वी आर यूजिंग द बॉसिनिस थ्योरी क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर मोर रिलायबल। समझ रहे हो बात को? यस सर। और ये जो मैंने आपसे न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट पूछा था, तो ये जो बच्चे न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट होता है, इससे आप किसी भी तरह की लोडिंग के कारण सॉइल में एक पर्टिकुलर डेप्थ में प्रेशर लिख सकते हो। लेकिन ये जो आपकी बॉसिनिस और वेस्टरगार्ड थ्योरी है, ये पॉइंट लोड के लिए वैलिड है। अगर सर्कुलर लोडिंग होगी बच्चे तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्ट्रिप लोडिंग होगी उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और जो लाइन लोडिंग वाला फॉर्मूला है वो हम इंडियन रेलवे में फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरा ये जो रेल होता है ना, इसके ऊपर जो व्हील्स के कारण लोड आएगा, रोलिंग लोड, ये जो स्लीपर के ऊपर ट्रांसफर होगा एज ए यूटीएल, तो एक तरह से लाइन लोड ही होगा ब्लास्ट के ऊपर। यस सर। ठीक है।